सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेरा। खबरां दी इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। गलबात करांगे अमेरिका दीआं तमाम वड्डियां खबरां दी। अमेरिका तो गोलीबारी दीआं घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं। एक बार फिर तो पार्टी दे विच गोलियां चलीआं, जिथे गोलियां लगण कारण 4 जाणे अजिहे ने जिन्हां दी जान चली गई ते इस तो इलावा कुछ जख्मी भी होए ने। अधिकारियों वालों ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी विच किस वालों ते किहड़े कारण गोलियां चलाईआं गईआं। अमरीका तो एक बार फिर तो गोलियां चलण की खबर सामने आई है, जिथे फायरिंग विच 4 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों वालों इस बारे जानकारी साझी की गई है। दस दिए कि अमरीका विच गोलीबारी दीआं वारदातां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं। ताज़ा जानकारी अलबामा तो सामने आई है, जिथे एक जन्मदिन पार्टी विच गोलियां चलीआं। पार्टी अंदर 20 लोगों ते गोलियां चला दित्तिआं गईआं, जिस बारे अधिकारियों ने वधेरे जानकारी साझी करदिआं दस्सिआ कि 4 लोगों की गोली लगण कारण जान चली गई ते कई जख्मी होए हन। स्थानक मीडिया रिपोर्टां मुताबक एक घटना एक लड़की के जन्मदिन की पार्टी दौरान सामने आई, जो कि डांस स्टूडियो विच हो रही सी। एजेंसी ने गोलीबारी की घटना बारे बहुती जानकारी अजे नहीं दित्ती। घटना दे नाल जुड़ी वीडियो पुलिस के हथ लगी है, जिसनूं देखिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी का यह मामला शनिवार रात 10:30 के करीब सामने आया। किस वालों गोलियां चलाईआं गईआं ये तां अजे नहीं पता लग सकिया। पुलिस अधिकारी मामले के संबंध विच जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिस तो बाद उन्हां वालों अगली अपडेट दित्ती जावेगी। समुद्र दे विच 2 टन नशा तैर रहा सी, जो कि पुलिस के हथ लगा है। अधिकारियों का कहना है कि इसनूं बंडल दे विच बन्निया होया सी, जो कि समुद्र के उपर तैरदा होया उन्हां नूं मिलिया ते पुलिस इस संबंधी जांच कर रही है। समुद्र दे विच तैरदा होया नशा पुलिस के हथ लगा। समुद्र दे विच 2 टन कोकेन तैर रही सी। इटालियन पुलिस वालों इस बारे जानकारी साझी की गई, जिथे उन्होंने दस्सिया कि समुद्र विच तैरते हुए नशे की बरामदगी हुई है। इस नशे की कीमत 450 मिलियन US$ दसी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो नशा समुद्र के विच तैर रहा सी, उसनूं जाल दे नाल बन्निया होया सी। इस नशे नूं चंगी तरह प्लास्टिक दे विच लपेटिया गया। इसनूं इस तरह लपेटिया गया कि वह पानी के हेठां ना डुब जावे। अधिकारियों वालों दस्सिया गया कि उन्हां दे हथ वड्डी मात्रा दे विच नशा लगा, जिथे उन्हां वालों 1600 पैकेट कोकेन दे बरामद कीते गए, जिन्हां नूं 70 बंडलां दे विच बन्निया गया सी। हुण अधिकारियों वालों इस संबंध विच जांच पड़ताल की जा रही है। हुण तक की अपडेट दे विच उन्हां वालों दस्सिया गया कि किवें वड्डी मात्रा दे विच नशा समुद्र के उपर तैर रहा सी ते उन्हां वालों इसनूं बरामद किया गया है। कमला हैरिस वालों सलाह दी गई है। वाइस प्रेजिडेंट एक मुद्दे के उपर बोलते हुए दिखाई दिते, जिस बारे उन्होंने अपना पक्ष के विचार साझे किए ने। वाइस प्रेजिडेंट कमला हैरिस वालों सलाह दी गई है ते उन्होंने इस संबंधी अपना पक्ष भी रखा। वाइस प्रेजिडेंट का कहना है कि ओके डोके दे झांसे विच ना आओ। हुण किस दे उपर एक टिप्पणी वाइस प्रेजिडेंट वालों की गई, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। So as we all know, last week we marked the 55th anniversary of the assassination of Reverend Dr. Martin Luther King Jr. And every year NAN holds this conference in April to honor Dr. King's legacy. So I'll tell you, I have been reflecting recently that among Dr. King's many gifts was his ability to understand the present moment in the context of a vision for a better future. So Nan, in that spirit then, let us clearly understand the moment we are in. A moment in which our hard-won freedoms are under attack. Because just look at where we are. Extremists across our country attack the freedom to vote. They ban books to attempt to erase America's full history. They attack the ability of people to love openly with pride. They attack the freedom of a woman to make decisions about her own body instead of the government. They attack medication that for 20 years the FDA ruled as being safe.
ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। In 2 short years, President Biden, along with the Democrats in Congress, have added $6 trillion to our national debt burden, which created inflation, made us more dependent on China, and has undermined Medicare and Social Security. Today, it's the American people who are left paying the price. Americans have received a pay cut for 24 consecutive months. The longest streak in American history, as inflation has just persisted. In fact, since President Biden took office, families have lost the equivalent of $7,400 worth of income. Nearly 6 in 10 Americans are living paycheck to paycheck, struggling to make ends meet. For young families, Biden's inflation means home ownership is moving further and further away. For our seniors, Biden's inflation means a lifetime of retirement savings are being ravaged. And now we see the collapse of the largest bank since the Great Recession. It's a direct result of incompetent bank supervision and the negative effects of constantly fighting President Biden's inflation. It is basic economics that when Washington prints more and more money, prices go up and purchasing power comes down. As my favorite economist, Milton Friedman, said it more than 50 years ago, inflation is made in Washington. Yet rather than working with Republicans to find a reasonable agreement to tame inflation, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। Eventually, I think, move to a cashless society, and then they would obviously have oversight over your transactions, have the ability to impose things like social credit scores, and that's not like an insight unique to me. I mean, people have said this is potentially something that could be abused, and so we talked about, hey, we want to do this in Florida. Well, I'll tell you what. I mean, like, these corporate media outlets, they're like so upset about this, and they're all doing the same thing. And when you see that behavior, you know you're over the target with this. So we're going to be able to they don't have the authority to do this unilaterally, but if they try, we'll have protections here in Florida. And of course, Congress should not ever support anything such as that. So that's just one example. Yeah, we believe in actually getting ahead of this stuff, and so that's what we're doing. Now here is an example of something we didn't necessarily think we would be needing to do, but it's something that we have to do. We have a government of laws, it said, not a government of men, and that includes the law being superior to big corporations, even corporations as big and powerful as Walt Disney Company. They are not superior to the laws that are enacted by the people of the state of Florida. And if you remember 2022, we had a special session of the Florida legislature. Commissioner Simpson was the Senate president at the time. Some of these members were there, where we said, you know, this idea of one corporation having its own government in Central Florida is something that is no longer in the best interest of the state of Florida. So we put down the marker that we were going to be going in a different direction, and a lot of people didn't think that would be anything that would even be possible, given how much heft and how much power that this one company had withstood. And so, you know, my mantra was, you're not going to have Disney have its own government in Central Florida. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।